आज हमने वेव्स का सेक्शन स्टार्ट करना है एज यू गाइस ऑलरेडी नो। वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स लाइक रियली सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स फर्स्टली अंडरस्टैंड कि वेव्स होती क्या है। वेव इन itself is nothing, it's just a method of energy transfer। ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि लेट्स से कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अगर एक ने अपने आगे वाले लाइक पर्सन को पुश किया, तो वो दूसरे पे गिरेगा, वो दूसरे पे गिरेगा, and likely a lot of people will fall, even though they will be balanced. So maybe that's not the best example. Let's take an example of domino styles. Domino tiles. अगर आप एक को पुश करते हैं तो दूसरी गिरेगी, फिर अगली वाली भी गिरेगी, फिर अगली वाली, and so on. You guys might have seen those crazy videos on YouTube or Instagram जिसमें वो इतना पूरी पूरी बिल्डिंग में सेटअप कर लेते हैं डोमिनोज का, and then they push one and all like it falls all the way till the end. So this push is waves. आगे अगर आप इस डोमिनो वाले एग्जांपल को देखें तो ये जो डोमिनो ब्लॉक्स हैं ये अपनी जगह से नहीं हिलते, राइट? वो गिरते तो हैं बट individual blocks stay where they are, right? It's the push that is transferred or forwarded to the next block. Likewise, waves transfer this push. Okay? Waves क्या है? ये है एक तरीका उस पुश को ट्रांसफर करने का आगे, और हमारी एग्जाम्पल में उस पुश को हम एनर्जी कहते हैं. So waves are a way of transferring energy and information. Waves transfer energy and information. Why am I calling it information? We will see that more closely in the section of sound, लेकिन I'll just briefly explain that here. Sound एक wave की form है, like sound is a type of wave. और sound जो waves हैं वो क्या ट्रांसफर करती हैं? Information. like अभी मैं बोल रही हूँ तो waves के थ्रू आपको वो information transfer हो रही है. Okay? So waves transfer energy and information. I hope that analogy made sense as well. So is it clear कि wave होती क्या है? Yes, ma'am. Okay. Another way we describe waves is as vibrations या फिर oscillations. ठीक है? Vibrations. Waves को हम vibration या फिर oscillation about a fixed point ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं. अगेन अगर हम साउंड के एग्जांपल लें तो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं and that transfers information from one person's mouth to another person's eardrum, probably because that vibrates as well then, and that's how sound is propagated. Now I want you guys to read this thoroughly and tell me if there is any confusion so far. Ma'am, Yes. ये vibrations वाला अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन precisely put, जब let's say if one person is talking, I don't know how to draw. So if this is a person, let's say this is a person talking. I don't know, that looks more like an eye. So let's say there is a speaker instead, because I don't know how to draw a talking person, a walkie-talkie maybe, और इसमें से आवाज आ रही है, okay? और ये किसी पर्सन का ईयर, okay? So होता क्या है कि ये जो waves हैं that cause the air particles to vibrate,
और उन वाइब्रेशन से ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. So waves are these vibrations that transfer information or forward the information from one point to another. Is that clear now? Yes, ma'am. Okay. अभी मैंने ये एक पॉइंट बोला था कि जब आप इस डोमिनो टाइल को पुश करेंगे तो इट्स द पुश दैट इज ट्रांसफर्ड और ये डोमिनो टाइल को मतलब आगे नहीं चली जाएगी, राइट? द डोमिनो टाइल स्टेज वेयर इट इज. इसी तरह waves transfer energy without transferring matter. I'll write that point and then I'll explain it. So, wait, let me remove this general properties. I'm just going to continue this point. They transfer energy and information without transferring matter. अच्छा, इसको आप मैटर क्या होता है? मैटर हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड्स या गैसेस को जिनमें वेव्स होंगी. मैटर, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस. हम अपनी साउंड वाली एग्जांपल लेते हैं. I shouldn't have removed that diagram. Let me draw my majestic diagram again. So this is a walkie-talkie जिसमें से आवाज आ रही है. And this is a person's ear. Okay. So एयर पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं और वो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन और उससे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. एयर पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, लेकिन no, in this example you will understand the reason why. इस तरह बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं, बैक एंड फोर्थ मतलब इस तरह, बैक फोर्थ इस तरह वाइब्रेट करते हैं और इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होती है. लेकिन जो एयर पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते आगे, they stay where they are. Actually, I don't think this will be ideal here because air particles are definitely always moving here and there. The point here is कि ये जो wave है इसका जो matter है it stays where it is. Let's take an even better example. I think I have one. Wait a sec. Okay, so if this is the ground or ground में solid particles हैं. If you remember the structure of solids, they're closely packed and fixed patterns. Particles क्या है? Closely packed and fixed patterns. अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और अपना maybe अपना कान जमीन पे लगाते हैं सुनने के लिए. So this is person's ear. I don't know how to draw it. Let me just draw a circle and label it here. उसने अपना कान जमीन पे लगाया सुनने के लिए वाइब्रेशंस को और लेट्स से बहुत दूर कोई चल रहा है, लेट्स से एक आर्मी आ रही है हॉर्सेस के साथ. So horses, this is actually how they used to detect के वो जो army है वो कितनी करीब आ गई है. In the ancient times they used to put their ears on the ground and feel the vibrations. जितनी वो ज्यादा उतनी vibrations उनको अंदाजा होता था कि ये जो army है वो हमारे कितने करीब आ चुकी है. So जब horses when they run on the ground and when their feet hit the ground तो वो vibration ground में solids में pass होती है आगे. वो vibration pass होती है लेकिन जो solid particles हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं. वो अपनी जगह पर क्या होते हैं? Vibrate होते हैं back and forth या up and down depending on the type of wave. And we will study the types of wave as well. For now, I want you to remember कि ये जो energy है, ये vibration है, ये आगे transfer हो रही है. Sorry, इस vibration से energy आगे transfer हो रही है, लेकिन matter
ट्रांसफर नहीं हो रहा, सॉलिड पार्टिकल्स, इंडिविजुअल सॉलिड पार्टिकल्स अपनी जगह पर रह कर ही वाइब्रेट कर रहे हैं. डज दैट मेक सेंस? Yes, ma'am. So are you guys comfortable with this definition? Yes, ma'am. That waves transfer energy and information without transferring matter. अगर आपको वो horses वाली example ना याद रहे तो simple ये dominoes वाली, I don't know if that's the plural is dominoes, but I'll just say it. ये domino वाली analogy use कर लें कि ये जो individual tiles हैं ये नहीं move करती, it's the push that moves forward. So the energy that moves forward and the domino tiles don't, which means the matter doesn't move. I hope I didn't confuse you guys. Yes, ma'am. Okay. Now let's look at some general properties of waves. Okay. For that, I'm going to draw a typical wave. I feel like we should study another concept before that, before the properties. Just leave this here. I'll take this forward. अच्छा, अब हमने अपनी लाइफ में waves ये पढ़ने से पहले भी देखी होती है. Maybe we never paid enough attention, but we have seen waves before that. हमारे पास two types of waves हैं, transverse और longitudinal. हम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे आज, लेकिन अभी मैं सिर्फ चाहती हूँ आप लोग विजुअलाइज करें वेव्स को. अगर आपके पास एक एक लाइक लेट्स से वॉल है या कुछ फिक्स सरफेस है, उस पे आप एक एंड को रोक के अटैच कर दें, फिक्स कर दें, और दूसरे हाथ से उसको ऐसे ऊपर नीचे स्ट्राइक करें रोप को. सो यू विल सी दिस पैटर्न फॉर्म इन द रोप. सो दैट इज योर ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, ट्रांसवर्स वेव ऐसी दिखती है. अभी आई वुड जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द विजुअल सेंस ऑफ दीज वेव्स. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज अभी हम पूरे एक सेक्शन में पढ़ेंगे. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड हाउ दीज वेव्स लुक लाइक. सो अगर आप एक रोप की एग्जांपल ले लें तो दैट विल बी अ ट्रांसवर्स वेव. और अगर आपके पास एक स्प्रिंग है वो भी एक पॉइंट पर अटैच्ड है और दूसरे दूसरे पॉइंट पर यू आर होल्डिंग इट, अगर आप उसको बैक एंड फोर्थ ऐसे आगे पीछे पुश करें, पुश एंड पुल करें, तो यू विल सी कि कुछ जगह पर ये स्प्रिंग करीब है और कुछ जगह पर इट्स डिस्टेंट from each other. So that is an example of a longitudinal wave. Okay? For now, what am I trying to say? I'm only trying to help you guys visualize wave motion. मैं ये डिफरेंस है कि जो दूसरी वेव है लॉन्गिट्यूडनल उसके जो पीक है वो शार्प होगी. Peak sharp होगी? No, 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 no. So basically, ये जो आपको जो दो चीजें नजर आ रही हैं, this is because आपको ये जो दिखने में sharp peaks नजर आ रही हैं, it's because it's a spring. असल में ये दोनों जो चीजें हैं, this is a visual example of how a transverse and longitudinal wave might look like. Okay, this is an actual rope and this is an actual spring. Yes, I don't ma'am. know what it's called. Let me Google this one thing. I think it's called a स्लैग नहीं, स्लिंकी. yeah, slinky. So that's the best way to learn more and more about longitudinal waves. Okay. Just one thing that I'll mention here is, so wait, just let me give them a heading. Wave motion. दो important चीजें हैं. एक है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा है मूवमेंट ऑफ एनर्जी. वेव मोशन में दो चीजें आपने देखनी है. एक है वाइब्रेशन ऑफ
matter, और दूसरी है direction of energy propagation. Propagate करने का सिर्फ मतलब होता है forward या transfer होना. Propagation, probably that's the spellings. ठीक है, direction of vibration of particles and direction of energy propagation. जब okay, सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. एनर्जी हमेशा फॉरवर्ड ट्रांसफर होगी. एनर्जी कहाँ होगी ट्रांसफर? फॉरवर्ड. So this direction of wave, which is the direction of energy propagation, is always forward. ये याद रखें. जब आपकी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स उसके पैरेलल होगी, that's longitudinal wave. और जब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स perpendicular होगी, that's your transverse wave. So let me write these points here for this one. When vibration is parallel to energy propagation, that's what? That's your longitudinal wave right here. और जब vibration of particles perpendicular होगी, just write perpendicular to energy propagation, that is your transverse wave. Is that clear? मैम Yes. आप ये वाले एरो क्यों कह रही है ना कि इनकी वजह से हमारे ये ट्रांसफर्स है और वो वाले पैरेलल वेव है. एनर्जी फॉरवर्ड ट्रांसफर होगी हमेशा. जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ अगर आपकी टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही हैं और वो जब बोलती हैं तो एनर्जी आपके तक आती है. इंफॉर्मेशन साउंड जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है टू टिल योर ईयर्स. सो एनर्जी फॉरवर्ड ट्रांसफर होती है. लेकिन जो एयर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो बैक एंड फोर्थ होती है, व्हिच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. सो you see this arrow, this one, if I drew it here, you will see it's parallel. और अगर हम इस एरो की बात करें तो ये क्या है? अप एंड डाउन है, यानी कि परपेंडिकुलर है इस एनर्जी ट्रांसफर से. सो जब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स पैरेलल होता है एनर्जी ट्रांसफर से की डायरेक्शन से, दैट्स योर लॉन्जिट्यूडिनल वेव. और जब डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर परपेंडिकुलर होता है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स से, दैट्स योर transverse wave. Is that what you were asking? Yes, ma'am. Okay. Now let's look at general properties, or maybe we can also call it features of a wave. Oopsie. So this was a heading for the section that we're covering, general properties. Now let's look at headings, features. For studying the features, I'm going to take an example of a transverse wave. So let me try to draw it. Let me just copy this one. Here. Now I'm going to draw one line in the middle here, like that. ये जो middle में line है, this is your equilibrium position. ये कौन सी position है? Equilibrium. Okay. यानी कि इस point पे जो भी air particle है या फिर solid या जो भी liquid particle है, वो आपका ना अभी ऊपर move किया है ना नीचे move किया है. It's at rest. Equilibrium यहाँ पे rest. Okay.
So now we're going to study some terms जो कि आपको लाजमी आनी चाहिए. अब इस इक्विलिब्रियम से जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, सो इक्विलिब्रियम से हाईएस्ट पॉइंट लेकर इक्विलिब्रियम से लेकर ये, yes, that's called the crest. So the red one is the crest. What is crest? It's the highest point on a wave above the equilibrium or rest position. Highest point on a wave above the equilibrium position. Next we have trough. Trough क्या होता है? It's the lowest point on a wave below the equilibrium position. Like equilibrium से जो lowest point है, that's your trough. So the blue one, trough, lowest point on a wave below the equilibrium position. Okay, next we have amplitude. Amplitude कहते हैं इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को. Okay, so wait. Let me just confirm one thing. एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? अगर आपकी रेस्ट पोजीशन है इक्विलिब्रियम, इससे मैक्सिमम या मिनिमम, both of them can be classified as amplitude. या तो crest या trough दोनों में से कोई भी amplitude हो सकता है. So I'm just going to write down amplitude here, and let's use black for amplitude. So that right here is your amplitude. Distance from equilibrium to the peak, which is the crest or the trough. Okay, let me just write that down here as well. Crest is also called the peak. Right there. Okay, next, what do we have? Next, we have wavelength. Wavelength कहते हैं अगर आपने वेव पे कोई भी एक पॉइंट लिया ना, कोई भी एक पॉइंट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, can be this point, any point. अगर आप उस वेव पे ट्रेवल करते हैं और आपको फिर वो एग्जैक्ट पॉइंट जब मिलेगा, तो वो पहले पॉइंट से लेकर नेक्स्ट एग्जैक्ट पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर आप लेट्स से ये पॉइंट लेते हैं, ओके, इस पॉइंट पे अगर आप चलना शुरू करें फॉरवर्ड, तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? नीचे को जा रहा है, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रैवलिंग. अगर आप इधर से इधर तक पहुंचे, नाउ इट माइट लुक लाइक दिस पॉइंट इज आल्सो द सेम एज द वन दैट आई हैव मार्क्ड एज पिंक, लेकिन इस पॉइंट पे अगर हम आगे चले तो वो वेव ऊपर जा रही है. सो दिस इज नॉट द सेम पॉइंट. अच्छा, हमने यहाँ से नीचे चलना शुरू किया, फिर हम इधर पहुंचे, फिर हमने दोबारा चलना शुरू किया, फिर अब हम जब दोबारा इस इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, राइट हियर, नाउ यू सी, क्योंकि वेव यहाँ से नीचे जा रही है, सो दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन आर identical.
like this situation and this situation is identical. तो फिर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है that's your wavelength. यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है that's your wavelength. Is it clear what wavelength is? मैम ये वाला आप फिर से बता सकते हैं कि रेड पॉइंट क्यों नहीं था? Yes. हमने अपनी जर्नी यहाँ से शुरू की थी, right here. और हम अगर आगे जाएं तो we see कि वेव नीचे जा रही है, right? अगर इस रेड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर वेव अगर हम आगे जाएं तो ऊपर जा रही है, सो यहाँ पे नीचे है वहां पे ऊपर जा रही है, सो दोज आर नॉट द सेम पॉइंट्स. हमें आइडेंटिकल पॉइंट चाहिए. हम आगे चलते गए फिर हम जब यहाँ पहुंचे हैं तो यू सी वेव यहाँ से नीचे जा रही है एंड दैट पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द इक्विलिब्रियम लाइन, सो दैट इज योर आइडेंटिकल पॉइंट. इज दैट क्लियर नाउ? कहीं पे भी आप शुरू करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ पे शुरू किया तो वी गो डाउन लाइक दैट, और अब हम जब इसकी ही हाइट पर पहुंच रहे हैं यहाँ पर वो वेव ऊपर जा रही है, सो दैट कैन नॉट बी द सेम पॉइंट. ये याद रखिए कि एक वेवलेंथ जो होगी वो एक ही हाइट पर होगी तो वो कंप्लीट होगी, राइट? तो मेरा हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पे भी वेव नीचे जा रही है, सो दैट्स हाउ वी नो कि एक वेवलेंथ ये इतनी है. यस मैम. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगी. लेट्स स्टार्ट हियर, हियर, हियर. 1 2 3. मुझे बताएं एक वेवलेंथ कहाँ से लेके कहाँ तक है. एंड लेट्स आल्सो टेक दिस पॉइंट 0. ओके, सो यू टेल मी कि एक वेवलेंथ 0 से 3 तक कहाँ से लेके कहाँ तक कंप्लीट हो रही है. मैम 1 से 3 तक. Excellent, that's right. So this is one wavelength. Oops, like that. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर वेव नीचे जा रही थी, like that. और इस पॉइंट पर भी वेव नीचे जा रही है, so that's how you know those are identical points. One last example for this one, ताकि पक्का हो जाए ये पॉइंट. अगर वेव यहाँ पे शुरू हुई है, and I'm gonna mark a few points. Wait, let me mark a few points. This point, this point. Wait, you can use a different color. Let's do black. This point, this point, this point. This point. मुझे बताएं एक वेवलेंथ कहाँ पे है. Let me mark these as well. 1 2 3 4. एक वेवलेंथ कहाँ से लेके कहाँ तक है. मैम एक 3. Sorry. So what do you guys think? मैम इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ वेव किस तरफ है? You can take it on any side. आप forward भी ले सकते हैं, backward भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. मैम एक Yes. 4 और 2 है और एक 1 एंड 3 है. That's right. यहाँ पे दो सिनेरियोस हैं. अगर आप इधर से देखें तो 4 से लेकर 2 तक एक वेव बनेगी. अगर आप इधर से ही देखें दोबारा तो आपको 3 से 1 तक भी मिल रही है एक वेव. ओके, अगर आप बैकवर्ड देखें फिर दोबारा आपको वही सब नजर आएगा. उप्स, एक आपको 1 से 3 तक नजर आ रही है और फिर आपको 2 से 4 तक भी एक नजर आ रही है.
I hope this concept of one wavelength is clear to you guys. Let me write that down Yes, कि ma'am. wavelength क्या होती है. देखिए इसका नाम ही है वेव की लेंथ, wavelength. So distance from one point on the wave to the same point on the next wave. Oops, that is amplitude. Let me mark as at A. और एक wavelength भी draw कर लेते हैं. मैम, Yes. आपने एम्पलीट्यूड ये आप क्या नाम था उसका क्रेस्ट पे क्यों ड्रॉ किया? एम्पलीट्यूड क्रेस्ट तक भी हो सकते हैं और ट्रफ तक भी हो सकते हैं. बस अपने इक्विलिब्रियम से जो हाईएस्ट पॉइंट है अप या डाउन, दैट्स योर एम्पलीट्यूड. मैम वो तो दोनों हो सकते हैं. क्या मतलब? हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट भी हो सकता है, ट्रफ भी हो सकता है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दोनों हो सकते हैं. So this one is your wavelength. हाँ. Lambda. इसका क्या symbol है? This is called lambda. Have you guys seen that before? No. So this symbol is called lambda. It's okay if you haven't. Let me write that down. Its symbol is lambda. Like that. क्योंकि now I want you guys to tell me. Wavelength एक length है, तो आपको क्या लगता है इसका SI unit क्या होगा? Meters. That's right. SI unit is meters. लेकिन मैम ये तो लैम्डा नहीं है. Lambda इसका नाम है, like symbol है. Unit और symbol में difference है. Okay, this is just a symbol. Wavelength कहने के बजाय I can write lambda, लेकिन इसका unit meters है. Yes, मैम. Okay. Next is frequency. एक सेकंड में अगर आपके पास लेट्स से आप यहाँ पे खड़े हैं. I want you to imagine a racing track. उधर एक red ribbon है और ये racing track है. अब अगर आप काउंट करेंगे कि एक सेकंड में कितने प्लेयर्स ने इसको रिबन को क्रॉस किया, एक सेकंड में how many players crossed, that's your frequency. एक सेकंड में कितनी वेव्स एक सिंगल पॉइंट को क्रॉस कर रही है, that is frequency. Clear? Is it clear what frequency is? मैम हम हमेशा एक सेकंड में देखते हैं. Yes, हमेशा एक सेकंड में. The number of waves passing a point in a second, that's your frequency.
फ्रीक्वेंसी का सिंबल है लोअर केस f, लाइक दैट. जैसे लैम्डा इसका सिंबल है वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है लोअर केस f. That's fine. Okay. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? एनी आइडिया? मैम इसका यूनिट, क्योंकि ये नंबर्स ऑफ वेव्स लेंथ पास एट सेकंड, मैम इसके अंदर टाइम तो आएगा, सेकंड्स ओके. आएंगे और सो इसका जो नंबर्स की। यस, सो इसका जो एसआई यूनिट है वो डिराइव डिराइव नहीं है. वी कॉल इट हर्ट्स. एच सी, हर्ट्स. अगर हम उसको डिराइव करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हैव टाइम इन इट, बट अगर हम डिराइव करेंगे तो वो पर सेकंड होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या पर सेकंड. सो नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता. दैट विल बी 1/s व्हिच इज पर सेकंड, राइट? और इसको हम कहते हैं hertz. But we're not going to go through that route of per second. We're simply going to call it hertz. Okay. Next, we have a very, very, very important equation. You can add multiple more varies with it to understand ki kitni important hai. And that equation is wave speed equation. इसको हम wave equation भी कहते हैं. वेव इक्वेशन क्या है कि वेव की जो स्पीड है v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा. v इक्वल्स f लैम्डा, लाइक दैट. तो क्योंकि ये स्पीड है, इसका ऐसा यूनिट क्या है? meters per second. I'll repeat that. So this is wave speed v. What is it equal to? Frequency of the wave multiplied by the wavelength of the wave. Clear? यस मैम. और अगर हम इसको words में लिखें, so we're just going to say that wave speed is the distance traveled by a wave per second. Now, the wording might not make much sense to you, so I will do a little bit of tweaking here. अच्छा, frequency जो है, इसको हम कहते हैं number of waves passing per unit time. So we can also write this as 1 divided by t. Learn this. Frequency is equal to 1 divided by t. Okay? अच्छा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाई टी है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करूँ और मैं एफ की जगह 1/t लिख दूँ मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ. सो दिस लेंथ डिवाइडेड बाय टी या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टी किसका फॉर्मूला है? स्पीड का या That's right. वेलोसिटी. So that's why it's called speed. इसको वेव स्पीड हम क्यों कह रहे हैं? शायद आपको एफ लैम्डा में वो नजर नहीं आए, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को 1/t लिखें और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, then you will better be able to see why it's called wave speed. मैम Yes? अगर इसमें डायरेक्शन हो फिर तो वेलोसिटी नहीं बन जाएगी? Waves में we're not concerned about direction. V is just a symbol for speed. Okay? यस मैम. Waves में we're not concerned about scalars and vectors, so you don't have to worry about that.
नेक्स्ट important term है हमारे पास. I'm just gonna have to move this away because we don't have enough time to discuss it, so we'll just move it for next class. Next point है wave fronts. Wave fronts क्या होते हैं? I'm not sure if you have ever noticed, maybe in a pool or water in a pond or anywhere, आपने कभी नोट किया कि पानी में, oops, why is the color not working out well? Okay, whatever. We'll just go with the green. Have you ever noticed कि पानी में कभी-कभी ये क्या हो रहा है? एक minute. Okay, this is good now. In the water, have you ever noticed कि कभी-कभी कुछ जो उसका part होता है, it's brighter than the other portions? Like कुछ lines पानी में, अगर पानी ऐसे है, एक water body में, there are streaks that are brighter and then there are streaks that are dimmer than the other ones. Have you ever seen that? No, ma'am. Okay, maybe next time, if you happen to be at a pool or maybe by a lake or something, मैम आप and किस चीज की बात कर रही हैं जो रिफ्लेक्शन नजर आता है? it's not exactly reflection. पानी में मैम कभी कभी, वेव फ्रंट्स yes, वो होते हैं जो लहरें होती हैं. yes, precisely put. इवन अगर आपके ओके पास एक बकेट भी है पानी के ऊपर, अगर आप उस पर पानी मैम. शाइन करेंगे टॉर्च से, तो आपको नजर आएगा कि उसकी बेस पे कुछ वाइट कलर के पैटर्न्स बन रहे हैं. मैम जब भी, हवा चलती है तो फिर बच जाती है वाटर सरफेस पे, वेव्स So मूव कर waves जाती are a हैं. little different compared to wave fronts. Okay, wave fronts are just a useful way of visualizing waves from above. एक वेव फ्रंट आपको एक वेव रिप्रेजेंट करता है. I will draw a simple diagram जो आपके लिए relevant है, and if you still have questions about wavefronts, I will recommend that you YouTube that a little bit, and then we can discuss it afterwards because we're a little short on time. So your content that you should know is this. Those are a little, I think they're even. They're fine. Okay. So wavefront क्या होता है कि, okay, let me write that down. There are a useful way of picturing waves from above. Each wavefront represents a single wave. If I draw a line like that, this arrow shows the direction of movement of the wave. So what is that arrow? Let me write that down as well. So this arrow is shows the direction of wave movement. Okay. And sometimes we call it array. And what you should know for past papers is that distance between each wavefront is equal to a wavelength or lambda. और जब अगर ये वेव फ्रंट्स करीब करीब हो तो इसका मतलब क्या है कि वेव की वेवलेंथ शॉर्ट है, and when the wave fronts are far apart it means it's a longer wave. Let me show you that here as well. अगर मैं इस वेव फ्रंट को यहाँ ले जाऊं और जब वेव फ्रंट्स करीब हैं, so this wavelength lambda is smaller
and like that वही situation अगर मैं repeat करूं, and this wavelength is longer. इतना बस आपको बताना चाहिए. Is that clear? मैम हम लोग यूं कह रहे हैं कि एक वेवलेंथ इसमें स्मॉल है, एक लार्ज है हम कि इसमें या ये कह बस। रहे हैं कि जब वेव फ्रंट्स करीब होते हैं तो वेवलेंथ स्मॉल होती है, और जब वेव फ्रंट्स दूर दूर होते हैं तो वेवलेंथ लार्जर होती है. तो मैम ये हम एक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? So we will study this in what is it called, longitudinal waves, कि जब वेव फ्रंट्स या फिर particles करीब करीब होते हैं, so that is your compression, और जब वो दूर दूर होते हैं that's your rarefaction. So we're going to study that tomorrow inshallah. यस मैम। Okay. One last thing before I end today's class is a discussion about wave speed, this important wave equation. ये बहुत important equation है. I want us to practice a question for this. बहुत simple सा question and nothing difficult. That if a wave has a speed of 0.2 meters per second and a time period t of 2 seconds, or let's call it, wait a second, 0.04 minutes, what is the frequency? What do you guys think? How are we going to find that out? Frequency क्या है? मैम टाइम को हम लोग वन और उसको That's right. फिर Frequency is लैम्डा से simply 1 divided by, that's right, t. So 1 divided by time minutes में है, इसको seconds में करें. कैसे करेंगे seconds में? मल्टीप्लाई बाय। That's right, multiplied by 60. So let's see what comes there. 1 divided by 0.04 into 60 is 2.4 seconds. 1 divided by 2.4 is 0.42 hertz. और नेक्स्ट पार्ट है आपका कि वेवलेंथ बताएं क्या है. इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? V equals f lambda. इसको रीअरेंज करें. लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा किसके इक्वल होगा? फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड ले जाए. मैम हमारे पास लैम्डा है। लैम्डा इज व्हाट वी आर फाइंडिंग. लैम्डा ही हम फाइंड कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर लिया पिछले पार्ट में, और टाइम पीरियड आपको गिवन है, और स्पीड भी गिवन है. सो v इक्वल्स एफ लैम्डा को आप रीअरेंज करेंगे, लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे, और फ्रीक्वेंसी लैम्डा के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी. सो यू हैव लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी, सॉरी, स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. स्पीड आपको गिवन थी यहाँ पे 0.2 मीटर्स पर सेकंड. 0.2 divided by frequency आपने कितनी ऊपर वाले पार्ट में फाइंड किए? 0.42. So your final answer will be 0.2 divided by 0.42, and that is 0.48 meters. So I added an additional part to help you. Question में mostly आपको speed और time period given होगा, और आपने खुद ही lambda find out करना होगा v equals f lambda से. But you see आपके पास frequency given नहीं है, तो आप 1 by time period से पहले frequency निकालेंगे, फिर उसको अपने formula में plug in करके you will find out your wavelength or lambda. मैम v And की remember, जगह हम s लिख सकते हैं। आप
I wouldn't recommend that because this is an ideal notation, but because S जो है वो displacement का symbol है. I know it sounds weird, okay? Y is S displacement and V speed, but this is how the physicists have set it up. So I would recommend to stick to it. आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत भी हो जाएगी. V equals F lambda and stay consistent with the units. Minutes को seconds में जरूर करना है. That is a must step here and the rest is good.